Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone. Thanks for joining us again today. I would like to request you to mute your microphones. It is Friday today. We'll complete our lecture within 25 minutes today. Today's title it's regarding indoor games during COVID. Actually, we all know COVID has impacted the lifestyles of everyone. It has simply rendered us. There are some background noises. I don't know किसकी mic अभी on है. यहाँ पे कुछ noise आ रहा है. Please आप अपना microphone ये mute कर दीजिए पहले. Because we are recording this. इसके बाद हमारा ये problem होता है कि हमें फिर वो cut करना पड़ता है और वही वीडियो आगे करना पड़ता है. Please microphones off कर दीजिए. तो इस कोविड पैंडेमिक की वजह से हम घरों में फंस चुके हैं या हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे, जो प्लेग्राउंड जाते थे, जो खेलने जाते थे, we had to adopt to this situation. इस सिचुएशन के साथ हमें अडॉप्ट करना पड़ा है और हमें मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी बन गया है, जिसमें मतलब उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. अब इस पैंडेमिक के दौरान जो हम पे जो असर पड़ा है या बच्चों पे जो असर पड़ा है, एडल्ट्स पे असर पड़ा है, एक चीज देखी गई है कि जो एक्टिव लाइफस्टाइल है वो रिड्यूस हो गया है, वो कन्वर्ट हो गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल में. और इसमें जो है स्क्रीन टाइम जो है वो ज्यादा हो गया है, स्क्रीन टाइम जो है इंक्रीज हो गया है. स्क्रीन टाइम वेदर जो हमारे घरों में बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं या हम खुद क्लासेस देते हैं या सेल फोन पे हम टाइम स्पेंड करते हैं या कंप्यूटर पे टाइम हम अपना स्पेंड करते हैं या टीवी के साथ, उस सारे टाइम को हम स्क्रीन टाइम बोलते हैं. और इस स्क्रीन टाइम की वजह से ये जितना ज्यादा हुआ है इससे भी बहुत ज्यादा असरात पड़े हैं, चाहे बड़ों पे या बच्चों पे. सो आज हमारे साथ मुबशिर साहब हैं, फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर DYSSGR नावपुरा से हैं ये. तो ये इसी टॉपिक को लेके ये बच्चों के लिए या इंडोर गेम्स ड्यूरिंग कोविड, इंडाइजिनस या माइनर गेम्स, उनके बारे में बात करेंगे. टाइम हमारे पास बहुत कम है क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच था जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे मुबशिर साहब. तो मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट करूंगा मुबशिर सर से कि वो अपने टॉपिक को लेके आपके साथ अपने तासुरात शेयर करें. प्लीज मुबशिर सर. Assalamu alaikum and adab to everyone. Hope you all are doing well during the pandemic and fighting this out by following the necessary guidelines and SOPs and staying at home. And first of all, I would like to thank the department, especially those who have made this refresher course possible. And I would like to thank my department for giving me opportunity to share my experience regarding the indoor games during the pandemic and what we can do during this pandemic to avoid the mental stress and physical health. Ever since the COVID-19 pandemic began, we all have been glued to screens, whether be it a laptop, whether be it a computer or TV. Maximum time we spent on these devices, these gadgets, and due to which we have the lack of physical activities, and most of the time we spend on these gadgets is inevitable because we all know that we are being performing the duties and classes and teaching on these online devices. Furthermore, when we use these gadgets and these devices, it has become very inevitable for online classes, but we use it all the day because we are bored and we have nothing to do. However, the increased screen time both among adults and children is becoming a concerning factor for physical and mental health. Tension, headaches, neck pain, backaches, eye strain, etc. are some physical repercussions of increased screen time. While consumption of negative information from social media, from TVs, from news channels, it has aggregated the mental stress and anxiety level. So we have a lot of time spending at home, so we can improve our family relationships, something we have seldom get time for before COVID-19. You can make it fun by playing some indoor games, which makes it win-win situation for all. There are a lot of indoor games that we can play during this pandemic, like Ludo. Many of the people are going
uh, playing this Ludo in online mode, but playing it in a physical condition, the experience there is unmatched. We can also play carom. We can play chess with our family. We can play an indigenous games like Raja, Wazir, Chor, Spahi, or names of place, thing, and animals, which will enhance the knowledge of our kids. Then card games like we can magic tricks with playing cards, or we can play cards with family, which will help them in reducing the anxiety level. We can also use hide and seek, rope skipping, playing volleyball with balloons, and also juggling footballs or using a bat and a ball to tap it around. Dancing is there, musical chair is there, Scrabble spelling for language lovers who want to teach their children the new words, or how to learn the language, or how to learn the new words and their spelling. Jump chargers are there, dumb chargers, where we use actions to opposite team members, where these team members actually try to understand what they are actioning, and they come up with the song or the name of the movie. Passing object is there with music, where the objective, where the stops, so that person has to perform some activity. There is truth and dare or bottle spinning. So these are all the minor games we can use in at home or during this pandemic. Moreover, COVID-19 presents many challenges for us, for parents, for guardians, as we are attempting to juggle work, life, and schooling from home while trying to keep everyone happy. So there arises three questions. First is why. As we know, a common person needs at least 60 minutes of moderate intensity activity per day. There are a lot of evidences where a person with the physical activities performs, he can develop physical as well as mental health. But problems is there that we are using more screen time, or we are using more gadgets in this pandemic, and it is affecting our health physically as well as mentally. So in order to reduce anxiety, in order to develop our mental health and physical health, we need to spend at least 60 minutes. It can be a small physical bouts to develop our physical health as well as our mental health. Then there is a second question: what we can do, what we can offer to our family during this pandemic, because we know that we can't go out, we can't perform outdoor games, we can't perform anything where there will be a lot of people going around. We don't know who is infected and who is not. So better to stay at home, follow the guidelines, and during these things we can add some physical activities like yoga. A yoga is a very nice practice to perform at home. It can help us in developing physical as well as mental health. Also, there is using football as a juggling sport, where we can juggle the football, or we can use few Costco balls to juggle it around to develop interest among the children. There's also, we can use rope skipping or playing volleyball with balloon. If we do have infrastructure, we can also play badminton with our kids or with our family, or we can also use table tennis and other form of indoor sports. We know there are a lot of recreational activities we usually perform during the 90s in our schools, in our colleges, in our universities. But with the span of time, these things are not there, because we have developed, we have used new technologies, we have used new devices, we have used new gadgets for passing the time or killing the time. But need of the hour is there, because we don't have shopping to do. We can't go out for shopping to buy these equipments for our indoor workout. So we can perform simple activities like playing Ludo, playing chess, playing carom,
or having rope skipping there, or having volleyball with the use of balloon. Also, we can juggle few cricket balls, we can juggle football, or we can have a simple tapping with the TT bats on the balls. So these activities can help an individual in performing the physical activities performs, and these will help in developing them in physical as well as mentally. So the third question arises, how? Because despite the fact that our best intention is to encourage physical activity among our family, but various members in our family or children doesn't want to do these activities as they are glued to smartphones. So what we can do, we can have a small competitions. These competitions will help in motivating these children and enhancing them and developing interest among those children in order to perform these physical activities. Also, we need to give them control where they can choose the physical activity of their choice. This will help them in decision making. Also, we have to give them, we have to make a connection between our children and our other family members in order to show them support, in order to show them that we are there. This will help in connecting our kids, our family members with us, and it will reflect in better health and better physical condition, also a better mental condition. It will reduce the reduction, it will reduce the anxiety level and also stress level. We have here many depression cases where families are getting more and more anxiety due to this lockdown. So in order to get them out of this, in order to help them in developing their mental setup, in order to restart our life, because lockdown has stopped and lockdown has stopped our life culture, and now staying at home is a new habit which is developing among us. But that doesn't mean that we stay at home and we become stagnant. We need to perform some minimal physical activities in order to remain physically as well as mentally fit. For that, we need these indoor games like I said earlier, Ludo is there, Carom is there, chess is there, passing parcel. If you don't have these equipments, you can easily go for passing parcel with music, dancing, musical chairs, juggling the football. If you don't have football, you can use a balloon, playing volleyball with a balloon, and you can also perform yoga. So these are the things you can do at home, and you can develop the taste and you can develop the habit of small physical activities in order to reduce the screen time we are having here. So if we see in the alarming situation there, the more and more cases of COVID-19 are increasing by day, and we don't know when this lockdown will stop. And also there, when the lockdown will stop, we don't know what next, what we have to do after that. How many people will be gathering at a place? So we need to develop ourselves. We need to have mental setup for that. We need to understand the situation. So we have to get ready for these things to increase our immunity, to increase our physical health, to increase our cardiovascular systems, efficiency of our cardiovascular system, to increase our health, increase our mental health, to remain focused on our life. So for that, we need these indoor activities, whether we have equipments for those or not. We can have many activities where we can use without any equipment. So that's all I have to say regarding this topic. Hope you have liked it. Thank you, Mubashir Saab. Thank you very much for the nice information you shared with all the participants with us. Actually, the need is for the realization. Realization in the sense, हम अपनी society में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं,
हमारे घरों में अपना एक रोल होता है, बड़े का अलग रोल होता है, बच्चे का अलग रोल होता है, फीमेल्स का अलग रोल होता है, मेल्स का अलग रोल होता है। तो एक फैमिली में फैमिली मेंबर्स अलग अलग रोल निभाते हैं और एक फैमिली बनती है। मुख्तलिफ डिफरेंट फैमिलीज एक जगह, मतलब एक सोसाइटी में होती है, जो सोसाइटी को तश्कील देती है, उस सोसाइटी को बनाती है। अब हम अगर घर से शुरू करें, अपने जॉब को, अपनी पोजीशन को, अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज करें, एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, whether he is a lecturer, teacher, REK, whatsoever, उसका अपना एक रोल है, एक अपने घर में और अपनी एक सोसाइटी में। यूजुअली वी सी, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, 30, 40, 35 फैमिलीज होती हैं जो सोसाइटी बनाती है, उसमें अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जो सोसाइटी में होता है डॉक्टर, उसको हम कांटेक्ट करते हैं। अगर कोई रिलीजियस मसला होता है तो हम जो रिलीजियस वहां पे जानने वाले लीडर्स, मौलवी साहब वगैरह, उनको कांटेक्ट करते हैं। अगर कोई टेक्निकल प्लम्बिंग का इशू होता है तो प्लम्बर को बुलाते हैं सोसाइटी में, उसको बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है तो हम यूजुअली जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं या पीडीडी वाले होते हैं उनको बोलते हैं। अगर बच्चों की पढ़ाई का मसला है, जो लेक्चरर, टीचर, जनरल एजुकेशन वाले होते हैं, तो उनसे मशवरा करते हैं, जी हमें बताइए हमारे बच्चे के लिए क्या ठीक रहेगा, इसको कैसे पढ़ाना है, इसको क्या करना है, इसका कैरियर कैसे सिक्योर होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है इस पैंडेमिक में, फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, हमारे पास कोई आया है सोसाइटी में कि हमारे बच्चे जी घर में बंद हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये मतलब स्क्रीन टाइम इनका ज्यादा ज्यादा हो गया है, ये मतलब पूरे लेथार्जिक और ये लेजी और इनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया है, आप हमें बताइए इनको घरों में कैसे एंगेज रखें। मतलब क्या हम अपनी सोसाइटी में अपने आप को ऐसे पेश कर रहे हैं, अपना ऐसा एक रोल निभा रहे हैं जिससे हम सोसाइटी में अपनी जॉब को लेके जाने जाएं। आई एम सॉरी टू से, बट मैक्सिमम, मैं अब कल हम डिस्कस कर रहे थे, मैं अपने कलीग के साथ, हमारे डिपार्टमेंट वी आर डिस्कसिंग फॉर 1 आवर रिगार्डिंग दीज थिंग्स, कि हमारा जो रोल है, हम क्यों शर्म फील करते हैं इसको बोलने में। अगर बच्चे अभी घर में बैठे हुए हैं, ये मतलब सुस्ता गए हैं, अब इस सुस्ताने की वजह से एक तो आप इनको देखते हैं, हम सुबह इनकी क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास होती है, तो मोबाइल फोन पे, अब वो जब खत्म हो गए तो करेंगे क्या। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सेल्फिश बन गए हैं, वो चाहते हैं बच्चे एंगेज रहे, ये जी ये फोन ले लो, गेम खेलो, आप कोई टेंशन नहीं है, ये कार्टून लगा के आप टीवी देख लो। अपना टेंशन कम करने के लिए, अपने आप को इस चीज से निजात दिलाने के लिए, दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, उनके साथ, उनकी सेहत के साथ वो खेल रहे हैं। अब अगर हम फिजिकल टीचर्स हैं, या आप फिजिकल टीचर्स हैं, या इंस्ट्रक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इट्स अवर प्राइमरी रोल कि हम पहले अपने घरों में देखें। अगर हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, इसमें 4 या 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, एक ज्वाइंट फैमिली है, तो इन बच्चों को कम से कम हम एंगेज करें, पहले इनके लिए एक रूटीन हम डिवाइस करें। अब हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे सो गए, सो जाओ, कोई बात नहीं, लेट उठो आज, क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं करना है, जितना ही सोएगा बच्चा हमें तंग नहीं करेगा। तो वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द डेली रूटीन, ये हमारे साथ है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम्स, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अपने घर से शुरू करेंगे तो एक रूटीन बनेगी। इन बच्चों को नहीं भाई 6 बजे उठना है, मेरे साथ पार्क में आओ, मेरे साथ इस लिविंग रूम में आओ या लॉबी में आओ, मैं आपको 2-4 एक्सरसाइजेस दिखाता हूँ। जैसे मुबशिर साहब ने बोला कि एटलीस्ट 60 मिनट्स एक्टिव लाइफ गुजारनी है, चाहे वो किसी गेम के साथ गुजारनी है, चाहे जंपिंग जैक्स। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर या इंस्ट्रक्टर का काम ये है, वो इन चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकता है। अदरवाइज कोई भी जनरल बोल सकता है कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं। अब अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं है तो कौन सी गेम खेलें, तो कैसे खेलें, किस एक्टिविटी में वो बच्चों को एंगेज करें, उस एक्टिविटी को आप लोग या हम लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं विदाउट मच स्पेस एंड इक्विपमेंट। सो जब हम ये घर से शुरू करें, तब में भी हमारी सोसाइटी में या जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, हम जाने जाएं, हमसे लोग सजेशंस मांगे कि हम बच्चों को कैसे हम ये एंगेज करें। सो these were all the things. We are running out of time. It's Friday today. I thank you all. I'm simply handing over the platform to Abida ma'am, in charge refresher course. Ma'am, please, would like to conclude with your words, ma'am. Are you getting me, Abida ma'am? Hello.
I guess she is not there.